just waiting for people to join live. Oh, there I see the first person was joined it. Hi guys. Hi. I know I said on my stories that I'll be live at 8:30, but it's almost 8:47, so sorry for a little bit of a delay. Charming Desert Rose says you lost. Could be because of the trauma that I've been going through for the past couple of days, mental trauma. And so while others join, I am actually expecting some more people to join the call. Today I have actually come with a very special purpose, and today is not just about hi and receiving your kind compliments. It's not about that, and sorry, I will probably not be reading all your comments, but please keep commenting. At the end I will go through all the comments and try and reply to you guys. So here I want to talk about something. I want to talk about this online bullying, which has become like a phenomenon these days. You are faceless when you're online bullying someone. जब आप ऑनलाइन में किसी को बुली कर रहे हो, एंड आप जब ऑनलाइन आके बेहुदा शब्द या बेहुदा बातें किसी को बोलते हो, it is basically you hiding behind a screen and not even caring about what somebody else is going to feel like, how somebody else is going to feel like. So आप बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो, है ना? When someone is, by the way, I'll save it on my IGTV. I know this is a very odd time and probably very few people will join the live. I'll put it on my IGTV for people to actually watch this, educate themselves from what I have learned, what I deal with. If it helps somebody else, then definitely that it's a great thing for me. So as a digital content creator, you put your life out there for everybody to sort of judge your content rather, and it's for public consumption. You put in a lot of hard work. Now hard work is again a subjective matter. It may not seem like when you put up a 15 seconds reel. पहले मैं भी सोचती थी क्यों ना ये इस रील में क्या है, बट आजकल मैं कुछ ऐसे बोलती नहीं हूँ, बिकॉज आई नो हाउ मच ऑफ हार्ड वर्क गोज इन टू क्रिएटिंग इवन छोटा से छोटा कंटेंट. सो किसी के साथ बदतमीज़ी करना या किसी का ट्रोल करना इज़ वेरी वेरी सिंपल. Anyone can do that, and you don't even need to do it from your real account. So you can hide behind your what should I say, behind your fake IDs. मेरे साथ हुआ है, एंड मेरे साथ बहुत बार हो चुका है. मैं बहुत ट्रोल्स खा चुकी हूँ, एंड मैं क्यों, सबको ही ट्रोल्स, वी गेट ट्रोल्ड एवरी डे, राइट? बट shit gets real and shit starts hurting when it comes from people whom you've interacted with in the past, whom you've trusted with information in the past, whom you have thought to be friends in the past. When they come up with trolling and when they kind of not care about how you how you feel, irrespective of them knowing how you are and what you stand for and what all you fight for and stand for, they don't give a damn about that. That is when it starts hurting. So I think for the past couple of days, those who have been following my stories, जो लोग आप लोग मेरे stories देख रहे हो या मेरे post देख रहे हो, बहुत तो मुझे पिंग किए हो कि आप काफ़ी गुस्से में लग रहे हो या आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो. कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि कुछ इंसान है
जिनके साथ शायद मैं पहले बात करती थी या पहले बहुत अप्रिशिएट करते थे हम एक दूसरे को, एंड नो मैटर फॉर वॉट रीज़न, XYZ रीज़न, द कनेक्शन गोज अवे. वी डोंट अग्री लेट्स से विथ ईच अदर्स आइडियोलॉजी. हम एक दूसरे के आइडियोलॉजी से अग्री नहीं करते हैं, विच कैन हैपन इन नॉर्मल लाइफ. तो हम डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, राइट? दैट इज़ नॉट अ रीज़न फॉर समबडी to go around spreading bad shit, lies about you, misquoting you. And उन जो ऐसे करते हैं वो खुले में नहीं करेंगे, तुमको बोल के नहीं करेंगे. अगर गुर्दा होता तो तुम्हें मैसेज करते, भाई तुम ऐसे कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड क्रिटिसिज्म और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या बेहुदा क्रिटिसिज्म, वॉट एवर. वो नहीं करेंगे. अपने स्टोरी में जाएंगे, अपने कंटेंट में जाके तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे, तुम्हारे बारे में लाई स्प्रेड करेंगे. दिस इज हाउ सोशल मीडिया इज बीइंग यूज्ड, गाइज, एंड इट हर्ट्स fucking badly, and I'm sorry to use this word, but I am so angry. मुझे, as I said in my previous story also, बहुत लोगों ने बोला कि टैग क्यों नहीं करती, उसका नाम रिवील कर दो. एंड अब क्या है ना कि मैं इतना दिन शराफत मेंटेन कर रही थी कि भाई ठीक है, चलो सोशल मीडिया है, फाइन, लेट इट गो. बट जब तुम्हारा क्रेडिबिलिटी पे कोई उंगली उठाए और जब तुम्हारे नाम कोई मिट्टी में मिलाने की कोशिश करे, वो चीज़ मैं कभी लाइटली नहीं लूँगी. एंड दैट्स वाई आई फील बैड एंड आई एम रिएक्टिंग बिकॉज ऑफ दैट. आप लोग समझो ना समझो, जिनको समझना है ना समझना है, दैट इज़ अप टू यू. बट ये सोशल मीडिया को आप कितना टॉक्सिक बना रहे हो, ये आपके ऊपर है. अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना वेंजेंस, अपना रिवेंज किसी के ऊपर ऐसे सोशल मीडिया में मत उतारो, या कहीं पे भी मत उतारो. तुम्हारे साथ कोई बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, तुमको जो अटेंशन चाहिए था उसने शायद वो अटेंशन नहीं दिया तुम्हें, और फिर तुम खफा हो गए और तुम उसके बारे में जाके अनाप शनाप बकते हो अपने स्टोरीज में या अपने रील्स में या व्हाटएवर XYZ. I have not revealed this person's name, and if shit gets real, I may do that. I may reveal his name and I may do that. And I am already seeking legal assistance or legal guidance about what is the best way or what is the right way to go about this, because this is a very sensitive topic. And I feel that many of you have already faced it. Many of you who are probably online right now have already probably faced this. But क्या है ना, हम जो है ना, मतलब बचपन से क्या सीखते हैं, एडजस्ट कर लो भाई, एडजस्ट कर लो. बट एक हद तक हम एडजस्ट कर भी लेते हैं. एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं है, बाय द वे. ये इंसान फर्स्ट टाइम नहीं कर रहा है. मैं काफ़ी टाइम से अपने वेल विशर्स से स्क्रीनशॉट्स मुझे मिलता है कि भाई आप कुछ करते हो या लाइव में कुछ बोलते हो या कुछ करते हो, उसको लेके वो ट्विस्ट एंड टर्न करके, मसाला डाल के, अपना पॉपुलैरिटी गेन करके या अपना भड़ास निकालने के लिए वो ये सब करता है. और मैं बहुत इग्नोर करती थी. ये सोच, मैं थोड़ा इज्जत देती थी कि ठीक है, चलो पास्ट में जिसको मैंने अच्छा बोला था, जो मुझे अच्छा बोला था, चलो उसको मैं ऐसे करके मैं रिएक्शन नहीं दूंगी. बट कम ऑन, अगर कोई तुम्हारे क्रेडिबिलिटी पे अगर क्वेश्चन उठाए ना, कोई तुम्हारे साथ तुम्हारे बारे में बहुत ख़राब चीज़ें बोले, तो एक हद तक आफ्टर दैट यू कैन नॉट टेक इट एंड यू शुड नॉट टेक इट. और हम सोचते हैं कि कुछ पॉसिबल नहीं है. बहुत कुछ पॉसिबल है. आप अगर करना चाहो, बहुत कुछ पॉसिबल है. यू कैन चूज़ टू बाइट बैक व्हेन यू वांट टू बाइट बैक. सो यू शुड नॉट बी स्कैर्ड. यू हैव नथिंग टू बी, बिकॉज you have not done anything to provoke that kind of behavior. The person who is doing this behavior has to be scared, because he has, for example, in my case, this person has put me through all the mental trauma.
I have been feeling bad. I have been suffering from all the mental trauma that he has been putting me over the time, and I have been quiet about it until this time, until the time I'm speaking right now. So this online bullying needs to stop. I'm not saying कि चलो, that doesn't mean कि criticize मत करो, constructive criticism करो भाई. जो चीज़ तुम मुंह के ऊपर जाके नहीं बोल सकते हो, जो चीज़ तुमको फेक अकाउंट से बोलना पड़े या अपने whatever सोशल मीडिया के पीछे बोल सकते हो, तो that is nothing. Say things which you can tell on a person's face. Otherwise, don't say it. And be sensitive. You don't know what the person is going through. You don't know. You should not be taking out your personal grievance, your personal whatever frustration on people you see online. Would you do that to your family? You wouldn't. You wouldn't do that to your best friend. But हम करते हैं. People, like a lot of people, we end up doing that, right? For example, this Advik Nadanik, he's asking me, are you a virgin? उसको क्या है? एक फेक अकाउंट बना के पूछ लिया उसने. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल डाला. फेक अकाउंट, वो क्या रास्ते चलते किसी लड़की को मुझे पूछ पाएगा? ये बात पूछ पाएगा मुझे? तो अपने आप को वो शेर चीता मत समझो तुम. सोशल मीडिया के पीछे बैठ के साइबर क्राइम को टैग कर दिया, ये सो एंड सो को. अरे भाई, क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो तुम? खुद जियो, खुद कंटेंट बनाओ या मत बनाओ. लेट अदर पीपल लिव देयर लाइफ. स्टॉप शिटिंग अराउंड. स्टॉप दिस बुलशिट. नोबडी नीड्स इट. नोबडी. But anyway, enough said about this topic. And there are various ways to handle it, guys. Again I'm saying that just find out the right forum. There are enough people to help you in this. Do it the right way. If you're doing it the right way, you don't need to be scared. Just don't do it in an underhand. Don't go down to their level. They are already below you, so don't go down to their level. Don't engage in any conflicts with them. It's just not needed, just not called for. But yes, do the actions which are needed from your end. Anything which you think will get you out of that situation. So this was not a speech. This was just me also telling you guys. You guys have been so nice. I mean, some of you are so supportive in a very, very constructive way, you know. And this is what I've gained on social media. I don't care if you like my photography or not. I don't even claim to be some big shot photographer. I like taking my own pictures, bhai. That is what I do. I like taking my own pictures. And if somebody wants to collaborate with me, and if I like their work, I will work with them. What is so complex about it? I don't understand. And another thing I've seen, anytime a female or a girl raises a voice and retaliates, you guys, or many of you guys who can be even girl or a guy, irrespective of the gender, use the word pseudo-feminism. Do you even know the meaning of what feminism is, that you're using the word pseudo-feminism so easily? Do you know it? You're using any time you see somebody is not agreeing with your idea, pseudo-feminist influencer, you're using it like a gali. And this doesn't stop here, guys. If you know, be it sexual molestation, be it and I'm going to tell this very openly. I think a few months back I said I'm going to talk about workplace harassment or sexual molestation. I think most of us, even some boys I know, have gone through sexual molestation in their lifetime.
we also go through, even in small amounts and big amounts, even in our workplace. I have gone through it. I have gone through it. I wasn't strong enough back then to take a very strong action against the person who actually exploited or tried to exploit me. I did not have the guts back then. But had it been today, I would have definitely taken a very strong action for the kind of person I am. But such people, sexual predators, cyber bullies, they will actually come and try to attack you in your weakest point, when you're not in your strongest self. I was going through a very bad patch in my life when this person really tried to exploit me. And I'm telling you, being very honest about it, I did not have the strength at that point of time to take a stand for myself. I feel bad about it because predators don't stop, bullies don't stop. They keep on doing it. They just wait for the right moment. They back off. For the time being, they back off. But then they kind of predate, they kind of find the next victim. I am also not here to play a victim card, by the way. I am here to educate you guys that please guys, speak up. Speak up. If you don't speak up, this thing will keep on happening. There is an online community which is brilliant out there, who's there to help you. Reach out to people, reach out to the right people. Even in your society, even in your community, outside this virtual world. Don't have so much less faith in the Indian legal system. I know we say, "Arey, kya hoga?" Arey, have you tried? If you have tried and if you have seen it has not helped, then I can understand. Of course, there are loopholes, but I have faith in the Indian legal system. I do have faith in it. And if push comes to shove, I will seek help from the legal system. So I always say, and I have given a quotation in the morning that there is no point in, it's a very famous quotation by Jordan Peterson. Jordan Peterson एक बहुत अच्छे speaker भी है. तो उन्होंने बोला है कि don't be a lamb or don't be a rabbit. Rabbit होके आप क्या कर सकते हो? You can just be eaten. But if you are a monster and if you don't act monstrously, that is virtuous. So have a controlled, disciplined monstrosity in you. कि कोई आके, no one can come and mess with you. And of course, it's very easy for me to say it right now because I am probably at a state where I feel mentally strong, where I feel empowered. But I can understand even if you're not in a state right now. But I'm saying you will be there. You will be. If you want to get there, you will be there. You may be vulnerable right now. You may be feeling weak. You may be at a state where you don't feel. Hundreds of questions may arise. Oh my God! If I speak against this person is going to do this to me. And yes, people can do a lot of things to you, but you need to try. You need to really make that attempt to stand up for yourself, because if you do not stand up for yourself, this whole shitty world is not going to stand up for you. You need to stand up. You need to seek that help. I'm sorry, I'm sounding like I'm lecturing you guys, and most of the times my lives are like, hi, hello, very chilled out. Those who have been attending my lives, you guys know that I'm generally a very chilled out person. But if I'm speaking out, I have a point for it. Sorry, Okay, time to read some comments. Guys, I'm getting a bit heated up. So Shanky says, shut up. I'm going to shut you up, whatever the hell you are and whoever the hell you are. You are nervous. No, I'm not nervous. I'm speaking very passionately, so maybe because of that.
Hi, I'm your fan from South India. Hi, Satish. No, I'm not. Sorry, Shekhar, I'm not going to add anybody. This is not a live. Today, I'm not going to add anybody because I've come here with a purpose. I wish I could give you a hug, support you for your braveness, Naveen Muruki. Thank you, Naveen, so much for your support. Thank you for calling me brave, but this is actually normal. I think this should be really normalized, where if something weird happens with you, you kind of speak up. How much money did you get for this live? Gaga? Yeah, this is by the way an example of systemic misogyny. This Suraj Leshram. He thinks I've gotten money to speak on this live. Wow, I wish I did. I would be a millionaire, by the way. So anytime somebody speaks up, you are like, what is this go? Are you a fucking child? Don't you have manners? Go learn some manners, by the way. I think you need to learn that. Anyway, your genuine reply, why you adding unknown people? I don't know. I'm gonna block some people whom I am just not understanding what they mean. Okay. Yeah, Happy Soul. I've removed Advani, whatever his name was. Very nice English. Sorry, I think I tried to, मतलब मेरा automatically मैं जब बहुत कुछ बड़बड़ाती हूँ मेरे इंग्लिश आ जाता है, इंग्लिश या बंगाली, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, हिंदी क्योंकि मेरा थर्ड लैंग्वेज है एक्चुअली, तो उतना इजीली आता नहीं है. আরে ম্যাডাম, যারা পপুলার হয়ে যায় তারা এইরকম বলে. পপুলারিটির সাথে কিছু নেই, ঠিক আছে? আমার পাশের বাড়ির মেয়েও খুব ব্রেভ হতে পারে, আর সেও অনেক কাজ করতে পারে, ঠিক আছে? অনেক রিটালিয়েট করতে পারে, বা অনেক কি বলে নিজের গাটস দেখাতে পারে, তার সাথে পপুলারিটির কিছু নেই. অনেকে পপুলার হয়েও কিছু বলে না. They don't raise their voices for the right reasons. Okay, so it's got nothing to do with popularity. You are doing good. Fuck the shit. Keep going. The bunny amazing. Thank you, bunny. This Jason guy, my god, what has he written? Bull crap. I mean, some of you are so, I'm sorry to say, but you guys, some of you are very very stupid. You don't even understand the context of a live, और तुमको समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है, एंड आके कुछ भी अपना रैंटिंग स्टार्ट कर देते हो, ठीक है? तो वो बहुत ही इडियोटिक लगता है. एनीवे, सो वैसे मेरा ऑफिस अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो मैं ये क्या हालत बना के रखे हो अपने बाल की. मैंने वैसे कोम्ब नहीं किया है अपने बाल की आज, सो बट एनीवे, दैट्स रियली नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट फॉर दिस वन. मैं यहाँ पे कोई सुंदरता के मूर्त बनने के लिए नहीं आई हूँ. अगर आपको बात सुनना है तो रह जाओ, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप निकल जाओ. और यहाँ पे जो आके बकते हैं, गाली बकते हैं, it's just not needed, right? Haters are growing, supports give you strength. Thank you.
anyway, more support and power to you. Thank you. Anyway, bottom line is, see an end to, if you feel you're being wronged in any way, be it online, be it offline, जो भी है, speak up करो. डिफ़िकल्ट है, आई नो, बहुत लोगों के लिए, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था पहले. और किसी को तो लगता है कि मैं बहुत फेमस होगी. मैं कोई फेमस नहीं हूँ, ठीक है. ये इंस्टाग्राम का 200K या 100K या 500K, इट डजेंट मैटर, ठीक है. इट डजेंट मैटर. हाँ, 2-4 लोग जानते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, बस. क्या, और ये पहचान से क्या होगा, क्या होगा इससे. हाँ, इट इज़ डेफिनेटली, आई वॉन्ट पीपल टू वॉच माई वर्क, बट डू यू नो मी? नो. सो ये जो इंस्टाग्राम का फेम है, ये वर्चुअल फेम ही है. कल अगर मैं मर जाऊँ या मेरा कुछ हो जाए, तो क्या मोस्ट ऑफ द पीपल, मे बी 5-6 जन या 10 जन या व्हाटएवर, 20 जन, शायद उन लोगों को पता चलेगा मैं मर गई हूँ. बाकियों को तो लगेगा ठीक है, वो पोस्ट नहीं कर रही है, बस, है ना. दिस इज़ द रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया. आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड पेसिमिस्टिक, बट किसी ने बोला कि मैं फेमस हो गई हूँ एंड इसीलिए मैं अभी ये सब बोल रही हूँ, मेरे लिए ये बोलना आसान है. नहीं, बिल्कुल नहीं. मैं अपने आप को तो कोई फेमस, ये जो काउंट है, ये है, वो मेरे लिए सीरियसली उतना, हाँ, डेफिनेटली आई एम थैंकफुल फॉर दैट. मैं मर नहीं रही हूँ. मैं नहीं तो हर एक हफ्ता में ये 500,000 लोगों को अपने लिस्ट से नहीं निकालती, ठीक है. मैं लिटरली मैं देखती हूँ कि कौन है, क्या है, फेक अकाउंट है, डीपी है, नहीं है, कोई फॉलोअर्स नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है. ऐसे फॉलोअर्स भी करते हैं. अगर मैं नंबर्स के पीछे भागती तो मेरे लिए हो जाता फिर, ठीक है. हाय मीना, वॉइस नहीं आ रहा है, मैं सुनाई नहीं दे रही हूँ क्या? कोई कंफर्म कर सकते हो? Am I audible? हाँ जी, बताओ, am I audible or not? कोई तो बताओ जी, कोई तो बताओ, am I audible? कोई तो बताओ. रिंकेश, मुझे लग रहा है आपके उसमें कुछ प्रॉब्लम है, शायद आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है. अब और एक चीज़, हाँ, और एक चीज़, बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि फुटेज के लिए करें. कहाँ का फुटेज भाई? मैं बिग बॉस में थोड़ी हूँ कि फुटेज के लिए करूँगी, या क्या है ये? मतलब कुछ भी करो उसमें, मतलब कुछ ना कुछ तो लोग टैग ही कर देते हैं. तो इससे बेटर है कि बोल ही दो यार. ऐसे भी बोलेंगे, वैसे भी बोलेंगे, तो इससे बेटर बोल दो. क्या है इसमें नहीं डरने का. थैंक यू प्रणव फॉर कंफर्मिंग कि मेरे आई एम ऑडिबल. तो एनीवे, आई एम गोइंग टू सेव दिस लाइव, एंड if it encourages somebody, even 5%, to take action against people who are bullying them on social media, or even probably in their real life, just reach out to the right forums and action will be taken, and we all will see an end to this kind of stupidity which happens online. This needs to stop. We need to make it a more positive place. We need to make it a more conducive place. And यार, मतलब just do, man, just do what you feel like, as long as you are not doing which is outside the legal system, as long as you are not doing anything unethical. I mean busy achi, as long as you are not doing, I mean busy achi, हाँ, as long as you're not doing anything unethical or you're not doing anything illegal, just do it. डांस करो, गाना गाओ, जैसे पिक्चर्स उठाना है उठाओ, सेल्फ पोर्ट्रेट्स करना है, किसी और से खिंचवाना है,
जो भी करना है करो यार, दुनिया जाए भाड़ में। मतलब लोग वैसे भी बोलेंगे, ऐसे भी बोलेंगे, तुमको जो करना है तुम करो। और ऐसे भी बोलेंगे माई लाइफ माई चॉइस, नेहा धूपिया ने बोल के। ये नेहा ना सबका मतलब क्या बोला उसने, और आई एम नॉट सपोर्टिंग वॉट शी सेड, बट शी हैज़ रियली क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर अस। क्योंकि आई एम सॉरी, I don't think Neha Dhupia will ever see this video, but because of what she said on roadies, हम जो भी बोलते हैं ना कि whenever I have said कि guys do what you want, आगे है 2-3 cynics कहीं से आ जाते हैं, बोलते my life my choice, Neha Dhupia is like, oh my god dude, get a life। और एक चीज़, जो लोग सिक्योर्ड होते हैं अपनी लाइफ में ना, वो अपने काम को लेके व्यस्त रहते हैं। कौन क्या क्या उसको लेके ट्रोलिंग करो भाई, इतना एनर्जी इतना टाइम किसके पास होता है? हाँ, खुद का काम करो यार। ठीक है, चलो, आई विल रैप अप दिस लाइव टुडे। I'll wrap up this live today, and I hope कि my only intention was to give some insight about what is going on with me also, and also मेरी बात सुन के अगर किसी को ऐसे भी लग रहा है कि या I'm not alone, she is also facing it, or he is also facing it, or XYZ is also facing it. Again and again I'm saying you're not alone, you will not be alone, and just hold on there, be strong, take actions, shout out loud, and सहन मत करो, strike back. Okay, bye my babies, bye, I love you guys, bye.